Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Welcome to the sixth lecture of Generative AI. So today we will start talking about embeddings, inshallah. And this is one of the topics जो हमारे साथ साथ आखिर तक चलेगा. So as you probably know, most of your pre-trained models essentially give you embeddings, trained embeddings as the thing that you need to carry forward and then do interesting stuff with it. So we will start with the simplest of embeddings. In fact, we're going to start with some overall concepts कि embeddings model कर क्या रही हैं, उनका goal क्या है. Then we'll keep developing one technique after another and we'll see कि उन techniques से कौन-कौन से problems solve होते जा रहे हैं until we reach the most sophisticated of embeddings which are going to come to us after the transformer. So we're going to do 3 to 4 embeddings techniques now. Then we will launch into evaluation and then after that the sequence models and transformers. And then after transformers, 2-3 embeddings हम और डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सारे मसलों को काफी हद तक सॉल्व कर देंगी. मतलब ऑब्वियसली जितने हमने मसले खोले होंगे उतने सॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद फिर एक और सेट ऑफ मसाइल निकल आएंगे जिसको फिर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कि आगे जाके उसका क्या किया जा सकता है. All right, so let's begin. Here are some good resources. Obviously, on the slides, you'll find many other great resources. Beyond this point, even up to this point, be about truthy. Like beyond this point, please get into the habit of reading the papers. So whatever details you find missing, because in the lecture I cannot cover each and every वो जो है ना उसका permutation कि उसमें किस phase में क्या होता है. So my recommendation is कि certainly read the resource जो आपको दिया हुआ है. In some cases the resources are papers. In other cases the resources are books. इस वाले केस में one main resource is SLP3 Speech and Language Processing third edition Jurafsky and Martin. उनका जो chapter है Vector Semantics and Embeddings, that's a major source of information on this, so please do read that. And we are expecting that you're reading, and you'll find that in your quizzes there will be questions which will be based on the readings. So lihaza, the question, don't expect the questions to be just from what I'm saying here. It can also be based on the readings जो आपको इसके साथ साथ मिल रहे हैं. So here's the chapter Vector Semantics and Embeddings. This is a really good resource जब हम word to vec पे पहुंचेंगे जिसका पेपर आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है. आप इसकी एक टेक्निक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. Although there are multiple word to vec papers, there are some basic techniques and advanced techniques. In the class, we'll be covering just the advanced technique, but I'll compare the basic and the advanced techniques to see why we go for the better techniques for training these word to vecs. Okay, so let's start out by first laying down some foundations and also understanding some terms which will be used throughout now from here until the rest of the journey throughout the semester. So we'll be talking about words, the relationships amongst words, and we'll be talking about senses, the things that words often represent. Okay, so let's start with this. So आपको याद होगा हमने briefly बात की थी. By the way, all of this is just skimming through. Hopefully, I'll be spending around 10 to 20 minutes doing this. So this is just a skim through. If you're interested in more details, just go read the book. You'll find many more details. If you're interested in even more details, talk to me and I can refer even more details around that. Right now, I'm just covering the bare minimum that we need in order to understand the terminology. So morpheme, जैसे हमने पहले कहा था, is the smallest meaning bearing part of a language, meaning bearing unit in a language. So, for example, you have two examples here dog plus S, fox plus ES. Here we have two morphemes. One, a meaning bearing morpheme dog, which represents a concept, and S, which represents the concept of pluralization. And the same is going on with the word fox and ES. Okay, now these morphemes could be roots, just like your dog and your fox, or could be affixes, which get attached to the root to modify it. कोई plural कर रहा होता है, कोई से कुछ और कर रहा होता है. Okay, so your root is usually the central morpheme, the core meaning, and then your affixes are what modify it. Now these modifications could take many different forms. So you see some examples here. Popular say unpopular. In this case, we are using an English prefix. Here we are using a suffix to go from popular to popularly. Some languages have infixes, like the Arabic and also the Urdu, kitab se kutub. Some languages also have circumfixes. So
एट द सेम टाइम एक वर्ड के दोनों साइड्स के ऊपर कुछ चीजें अटैच होती हैं और उसके नतीजे में इट क्रिएट्स अ न्यू वर्ड. When you're looking at all of this, you should be thinking in your heads, okay, I am eventually going towards a multilingual language processing system. Everything mentioned here is my problem. So how do we deal with that? Everything is a problem. By the way, ये अब जितनी terms आ रही हैं यहाँ पर I'm expecting you कि आपको वो सारी की सारी terms इसके बाद से आती होंगी. So I'll stop using the layman terms from here onwards. I'll start using the actual terms from here. Okay. Now, based on this concept, there are many different ways in which words get converted into other words. So, word relationship. Words have relationships with other words. Now, there are many. I won't cover them all. I'll just cover the first two, inflection and derivation. जिनकी मुझे फिलहाल अभी जरूरत है, बाकियों की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको डिस्कस कर लूंगा. Right now, I'm just mentioning two. So, inflection is the process where you get a root plus an affix in order to modify the different grammatical categories of the word without changing its core meaning. So word का core meaning change नहीं होता, part of speech change नहीं होता, dictionary entry change नहीं होती, सिर्फ उसकी grammatical categories change हो जाती हैं. So what do we mean by grammatical categories? Now the grammatical categories may include, for example, gender. So खाता से खाती. It could be number, singular, dual, plural. It could be status. अहमद ने वकास को छड़ी से मारा. Ne is indicating the one who's the subject. Ko is indicating the one who was the direct object. So this is what is known as the case or the status. So ये सारी की सारी changes को हम inflectional changes कहते हैं. ये changes एक ही डिक्शनरी एंट्री के अंदर मॉडिफिकेशंस ला रही होती हैं. इसमें मीनिंग नहीं बदल रहा होता. सो ये जस्ट रिमेंबर टू ऑफ दीज सिम्टम्स. द मीनिंग डजंट चेंज, द कोर मीनिंग डजंट चेंज, एंड द डिक्शनरी एंट्री डजंट चेंज. ये एक ही डिक्शनरी एंट्री के आपस के ताल्लुकात हैं सारे. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जेंडर की एग्जांपल्स है करता करती जाता जाती. नंबर की ये एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल सिंगल डुअल प्लूरल. सो लड़के लड़कियां, सो लड़का लड़के लड़की लड़कियां. स्टेटस, लड़के ने ये किया, and so on and so forth. Respect. अच्छा, so Urdu is very complex in that regard, by the way. Urdu has some other things as some other languages of the same family. It also has respect. So तुम versus आप versus तू versus the third person आप. आप ये कहते थे, not आप ये कहते थे. So आप, second person, applied to a third person out of respect. ठीक है. Similarly, these languages also use pluralization to indicate respect. हम कहते हैं, not all of us, just me, हम कहते हैं. So this becomes really interesting when you start writing out these things to a language model and you expect कि in response it will not be answering in plural and saying कि आप सब कहते हैं तो फिर हम भी कहते हैं. So like you expect कि your language model is going to be able to understand these things. Okay, and then there could be tense as well. All right. So very quickly, अब इसकी बहुत सी तफसीलात हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Let's go to the other one. छोड़ देने का मतलब है आप खुद पढ़ लीजिएगा, आप जब स्लाइड्स मिल जाएंगे. So derivation. This is the second important process जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी. Derivation is the word formation process which results in either a meaning change or a part of speech change. So या meaning बदल गया, या नाउन से वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कोई और चीज बन गई. So it changes. It's a major change. Derivation usually links your dictionary entries to other dictionary entries. It creates new dictionary entries. And in English, at least, it happens a lot due to affixes. So, for example, there's this meme. I know it sounds as though it should, but enlightenment has nothing to do with losing weight. So, light was modified through a series of affixes to become enlightenment. And in the process, it changed its meaning so much that it's no longer related to that particular sense of the word, but to a different word. Okay, so ये आपके सामने कुछ examples हैं.
ये cases हैं where the part of speech is changing. So beauty से beautiful, noun to adjective. Drink से drinkable, verb से adjective. Adjective to adverb, slow to slowly. Verb to noun, kill to killer. Adjective to noun, fuzzy to fuzziness. Adjective to verb, modern to modernize. Noun to verb, glory to glorify. But it's not always so simple. It could be really complex. For example, run to run is a zero affix noun to verb transformation. What does that mean? They had a good run. Noun. I run. Verb. Without any change in the surface form. So the surface form, which is the basis of our analysis, which is the basis of our tokenization, which will be the basis of our embeddings. This surface form does not always hold all aspects of meaning. Sometimes the meaning comes from just the context. I run, you run, he runs. These are all verbs. He had a good run. She had a good run. Look at this run. So all of these are examples of nouns, but the form of the word is not changing. This is known as zero derivation conversion. खैर आपको terms की जरूरत नहीं है. And then by the way, this is not something which is rare. ये सारे word वो हैं जो कि zero derivation ले रहे हैं. Mail, I email, or my email. So email करना verb. So strike, talk, salt, pepper, salt this dish, verb. And this, I don't know, uh, this bowl of salt now. Okay, so now that we have the basic idea with us, we are ready to define what is called the root. Root is the core meaning carrying thing, which is then modified by these affixes, either in a grammatical way through inflectional processes, or in a meaning changing or part of speech changing way through derivational processes. Okay, so here you have unrealistic. So the root word of unrealistic is real, जिसको इसने ओरिजिनली चेंज किया था. अच्छा, रूट ढूंढना बड़ा आसान है. इनफैक्ट older NLP processes सारे के सारे रूट निकालने की तरफ जाते थे. What they used to do was just cut out the affixes. एक एक करके affixes रिमूव करते जाएं. जो बच जाएगा आपका वो एक या एक से ज्यादा रूट बचेगा. ठीक है. सो रूट यूजुअली सिंपल वर्ड्स का एक ही होता है. कंपाउंड्स के केस में देखो भी मल्टीपल रूट्स. सो एस्टेब्लिशमेंट में ये एस्टेब्लिश है जो मजीद नहीं काटा जा सकता. प्लेड के केस में प्ले है. ब्लैक बोर्ड के केस में दो हैं, ब्लैक और बोर्ड. देयर आर टू रूट्स ऑफ दिस वर्ड. आई के केस में आई एंड हैव है, दोनों इसमें मौजूद नहीं थे. सो दे नीड टू बी ब्रॉट इन समहाउ. गीज के केस में गूज है जो कि इसमें मौजूद नहीं है. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि ये उसके अंदर डायरेक्टली पड़ा हुआ होगा और आपको काट पीट के मिल जाएगा. It's possible that it's not there and you have to bring it in somehow. Okay, lexeme and lemma. So now that we know the root, we can define the lexeme. ये हम इससे पहले भी define कर चुके हैं. So lexeme is a conceptual unit of lexical meaning. It's a meaningful thing. इसको समझना सबसे आसान यूं है कि ये एक डिक्शनरी एंट्री होती है. So ये meaning of a dictionary entry होता है. For example, the concept of run, runs, ran and running is common. The concept of running. The thought, the belief कि जो आप run कर रहे हैं, that mental image, that's the lexeme. और उस lexeme को represent करने के लिए usually we choose a word. So in dictionary we choose just one word जिससे इसको represent करते हैं, that's the word run. So ये word जिसको हम represent करने के लिए use कर रहे हैं, it's known as a lemma, and the concept that it's representing is called the lexeme. So lemmas represent lexemes. Lemmas have dictionary entries. Within the lemmas are the inflectional entries for those lemmas. Run, runs, running, ran. ये सारी की सारी उसकी inflectional variations हैं जो grammar की changes हैं या किसी और किस्म की changes. So your lemma is the head word that represents the lexeme. ठीक है. इसकी मजीद अगर details चाहेंगे तो again Jurafsky and Martin, SLP3. Okay, ये कुछ मैंने यहाँ पे examples आपको दी हुई हैं. This is a great example. अगर मैं आपसे पूछूं कि अनरियल का रूट क्या है तो रियल है, लेकिन अनरियल का लेमा क्या है? वो अनरियल खुद है. बिकॉज रियल में वो मीनिंग नहीं है जो अनरियल में है. अनचेंज द मीनिंग, सो इट चेंज द लेमा. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट के केस के अंदर मेरा रूट क्या है? एस्टेब्लिश. जबकि मेरा लेमा क्या है? एस्टेब्लिशमेंट खुद. Because establishment and establish are two different meanings. किसी चीज को establish करना, which is a verb. Establishment, establish हुई भी कोई चीज या जिसको हम कोई बिल्डिंग या किसी और चीज से प्रेजेंट कर रहे हैं.
So remember this. This is a good way. This is a good litmus test. Inflection relates a lemma to other members in the lexeme set. For example, run ko run se ya run ko running se. And derivation relates a lexeme to other lexemes. For example, real say unreal, या real say realistic, या real say unrealistic, and so on and so forth. ये सारी की सारी. So just that's why I introduced these two, inflection and derivation, really important processes. Okay. बेसिक मॉर्फीम लेवल की गुफ्तगू मुकम्मल. सो अब तक हमने किन चीजों की बात की है? वी टॉक अबाउट मॉर्फीम, smallest unit, which is meaning bearing. Could be a root word, could be something which is a meaning carrying affix. For example, S या ES या D या ED and so on and so forth. Okay. So morphemes हो गई. Morphemes could be roots, जिस केस में वो आजाद होती हैं, और बाउंड जो रूट्स के साथ अटैच होकर मीनिंग लेती हैं. खाली एस का कोई मतलब नहीं. जब वो बॉय के साथ लगेगा तो बॉयज बन जाएगा. अब उसका मतलब है, वो अकेले एस का कोई सफिक्स का कोई मतलब नहीं था. अन का कोई अलग से मतलब नहीं था. ठीक है. इसके बाद हमने देखे दो कॉन्सेप्ट्स किस तरह से वर्ड्स वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं. हमने दो प्रोसेसेस देखे, इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन. इन्फ्लेक्शन जो है वो सिर्फ ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करता है. वो एक ही डिक्शनरी एंट्री को रिलेट कर रहा होता है उसी की वेरिएशंस के साथ. और दूसरा डेरिवेशन जो कि मीनिंग या पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है, वो एक डिक्शनरी एंट्री को किसी दूसरी डिक्शनरी एंट्री के साथ रिलेट कर रहा होता है पॉसिबली. ठीक है. और उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा लेक्सीम का, विच इज अ कॉन्सेप्ट, लेमा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेमा की मॉडिफाइड फॉर्म्स हमें मिल रही हैं इन्फ्लेक्शन के थ्रू. ओके. So now that we have all of this, we have some examples here, and now we're getting into some more interesting territories. Sir, consult and consultant are different. Yes, are two different lexemes, two different lemmas. Because consult is a verb, and consultant is a profession or is a task that someone does. So noun and verb ये वैसे ही, और even अगर ना भी noun and verb होते तो इनका मान ही different था एक दूसरे से. But consult and consulted, or consult and consults, would be inflectional variations within the same lemma. जी. यस, आ रहे हैं उसकी तरफ. अब उसकी एक से ज्यादा लेग्जीम्स बनेंगी. तो अब आते हैं उसकी तरफ. वो हमारे असल में जो जिस चीज को हमने पकड़ना है ना, ये गुफ्तगू असल में शुरू जो मैं कर रहा हूँ, ये वो मैं मल्टी हेडेड अटेंशन के लिए कर रहा हूँ. तो इस गुफ्तगू को जाना उधर ही है कि ये तो वो वेरिएशंस हैं जो कि शराफत से सामने आ रही हैं. अभी ऐसी वेरिएशंस भी हैं जो कि बिल्कुल भी इतनी शरीफ नहीं है, वो फिर भी हैं. सो लेट्स सी. ओके. So यहाँ हमें बहुत सारी examples नजर आ रही हैं. Inflected forms, sometimes words share core meaning and part of speech but differ in status. For example, subject, object, possessor, he, him, his, she, her. So ये सारे के सारे जो है उसके roles change कर रहा है. Number, trunk, trunks, man, men. Gender, he, she. Type, proper, common. A word and its inflected forms form a lexeme set, and a head word of the lexeme set is known as the lemma. For example, man, man का man है. Trunk, trunks का trunk है. Play, plays, played का play है. But however, we have more interesting things. So अगर ये सामने हमारे, अच्छा ये मैं इसको दिखाने की जरूरत है या इसको छोड़ दें? Yeah, okay. We can just hear. Okay, let's look at this. We have a word mouse, which is what? A lemma. और इस mouse के आगे दो चीजें लिखी हुई हैं. Any of numerous small rodents or a hand operated device that controls a cursor. Okay. जो अभी इन्होंने बात कही थी, सरफेस फॉर्म चेंज नहीं हुई, सरफेस फॉर्म माउस ही है. The word mouse is now holding two different senses. So we have a concept of lemmas and we have a concept of senses. In other words, this lemma will essentially become two lemmas. There is one lemma of a mouse rodent and the other lemma of the mouse device. Okay. So a sense or a concept is the meaning component of a word. Lemmas can be polysemous, which means have multiple senses. So polysemy, ये वो पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में हमें लेकर जाएगा. इसेंशियली पॉलीसेमी का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, यू हैव द सेम मॉर्फीम विच कुड हैव मल्टीपल सेंसेस. इस मॉर्फीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी सेंसेस क्लियर करने के लिए, वी नीड मोर देन दिस मॉर्फीम इटसेल्फ. वी नीड द कॉन्टेक्स्ट. ये दाएं बाएं वाले बताएंगे कि ये रोडेंट की बात हो रही है, ये हैंड ऑपरेटेड माउस की बात हो रही है. I moved the cursor with my mouse versus the mouse took away the piece of cheese. तो ये यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा. और हो सकता है कि ये कॉन्टेक्स्ट आर्बिट्रेरीली लेंथी करना पड़े इस मीनिंग को डिसएम्बिगुएट करने के लिए. तो हम थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आते हैं. दिस इज अ रियली रियली फन एंड इंटरेस्टिंग डायरेक्शन इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग.
the concept of ambiguity, which at lexical level, at word level, the ambiguity arises from polysemy. Words के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था. Okay, so here you have another concept called synonymy. अभी तक हमने क्या देखा है? पॉलीसेमी. पॉलीसेमी का क्या मतलब था? एक मॉर्फीम है, उसकी एक से ज्यादा सेंसेस हैं. सिनोनिमी का क्या मतलब है? एक सेंस है, उसकी एक से ज्यादा मॉर्फीम्स हैं. सेंस सेम है, उसको रिप्रेजेंट एक से ज्यादा मॉर्फीम्स कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिल्बर्ट एंड हेजलनट, couch and sofa, big and large, automobile and car, vomit and throw up, water and H2O. Okay, हम कह सकते हैं कि ये synonyms हैं. Do you see any problem here? Do you see some problem with this synonyms? Any problem? Any observation about this? तो मसला आ रहा हो आपको? कोई तो मसला आना चाहिए जी. What would be, sorry? Huge. Okay. Big, large, huge. Okay. So आपने इसमें कहा कि अगर मैं इसी के साथ एक और ऐड कर दूं, huge. Can I call that a synonym or can't I? You tell me. कुछ कुछ कमेंट करें इसके ऊपर. इसमें कोई ना कोई मसला नजर आ रहा है. काउच एंड सोफा, बिग एंड लार्ज. यस, हमें ये भी नजर आ रहा है कि मीनिंग एक जैसा है, बट चले मैं अगर आपसे यूं ये सवाल पूछूं, अगर ये दोनों अल्फाज एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, तो फिर ये दोनों क्यों हैं? फिर ये नहीं होने चाहिए. Humans at their instinctive level are also very intelligent primarily because of being extremely lazy. इनफैक्ट जब आप लैंग्वेज की स्टडी या स्पीच की स्टडी काफी लंबे अरसे तक कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि लैंग्वेज के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे लेजी होने का होता है, चाहे वो थॉट लेवल पर हो या आर्टिकुलेशन लेवल के ऊपर हो या राइटिंग लेवल के ऊपर हो. वी डोंट वांट टू रिमेंबर मोर थिंग्स देन एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. वी डोंट वांट टू articulate more sounds than absolutely required. We don't want to write more letters or words than absolutely required. हम मिनिमाइज करते रहते हैं ओवर जनरेशन एंड इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. सो अगर एक ही चीज को दो वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें से एक खत्म हो जाएगा वक्त के साथ साथ, दूसरा नहीं रहेगा. तो इसका मतलब है कि कुछ तो और होना चाहिए जी. ओके, शाबाश, शाबाश. ओके, तो इनकी बात से ना एक बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि वाटर और H2O केमिकल कॉन्टेक्स्ट वर्सेस द अदर कॉन्टेक्स्ट. दूसरी चीज ये कि these two apparent synonyms were the reason for disambiguating the the part of the world from which that language is coming from, whether it's American English or British English or Flani English. एक ही चीज के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें एक से पता लगे. ओके, सो इसकी भी हम बहुत सी एग्जांपल सोच सकते हैं. हम फॉर एग्जांपल फुटपाथ वर्सेस वॉकवे सोच सकते हैं. हम फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग वर्सेस हॉर्सबैक राइडिंग सोच सकते हैं. वी कैन कैब और टैक्सी हम सोच सकते हैं. सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेनी 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 एग्जांपल्स. वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैम. सो these, so इससे क्या नतीजा निकला? There were some other hands. I would like to hear maybe one or two more opinions. Yes. Yes. Shabash. Excellent. That's a good observation. So basically, we are saying that we have word W1 and we have word W2 and we have sense S1, or let me just call it S1 W2, S2 W2, S3 W2, S4 W2, and then maybe S1 W1, S2 W1, S3 W1, words and senses. And synonymy essentially means that in some cases there is an overlap of senses. So it's not an absolute synonymy, it is synonymy in some of the senses of the word. कुछ senses में ये same है, कुछ में नहीं है. Okay, let me give you some examples. So
दिस इज अगेन समथिंग विच इज आर्ग्यूड बाय लिंग्विस्ट, जैसे मैंने बात आपसे कही थी, मैंने यहाँ पे probably डाला था, जहां से मैंने ये पढ़ा था वहां probably नहीं था. So essentially the claim, the linguistic claim is originally, and it's a fairly old claim, that there is no perfect synonymy. अगर दो वर्ड किसी लैंग्वेज के अंदर काफी अरसे से मौजूद हैं तो वो दो वर्ड दो कहीं ना किसी डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ कॉन्सेप्ट वो अपने साथ जरूर ला रहे हैं, कोई सटल शेड ऑफ मीनिंग ला रहे हैं, वरना वो दोनों ना होते, उनमें से कोई एक होता. ठीक है. सो पोलाइटनेस, स्लैंग, रजिस्टर, यॉनरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सी चीजें आइडेंटिकल हो सकती है, कुछ नहीं भी होंगी. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड H2O आर सिनोनिमस in some senses, but surfing guide के अंदर you never say H2O. Pick a wave of H2O. You need to catch a wave of H2O. Big and large, my big sister is fine, my large sister is not that fine. Okay? I really like this meme from Star Trek. I'm sorry and I apologize mean the same thing, except when you're at a funeral. Think about it. Then it means a completely different thing. I hope you never have to say I'm sorry at a funeral. Okay, so इस एक डायग्राम में we see both the concepts, we see synonymy as well as we see polysemy. Now try to figure out where do you see synonymy and where do you see polysemy. So assume कि जो मैंने तस्वीरें बनाई हैं वो senses हैं और जो नीचे नाम लिखे हैं वो नाम है. Raise hand if you can identify for me one polysemy. Bank and banks polysemy है. Why? Because मल्टीपल सेंसेस फॉर वन वर्ड, पॉलीसेमी. एक वर्ड दो सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. गिव मी एन एग्जांपल जहां पे यहां आपको सिनोनिमी नजर आ रही है. ओके, बॉक्स. सो ये जो चीज है ये बैक वक्त यहां और यहां मैप हो रही है. इट्स द सेम कॉन्सेप्ट being mapped onto two separate carriers, two separate holders, two separate symbols. Humans encode information in the form of symbols that we call language. This, this mapping is not always one-on-one. This can lead to multiple forms of interesting overlaps, and those overlaps are what we eventually have to disambiguate. Okay, let's take some concrete examples. Read it. One morning, I shot an elephant in my pajamas. What does the sentence mean? Raise hands, raise hands. Keep thinking about it, and when you have spent maybe like a few minutes, you'll see that the senses just keep growing. It could mean that, it could mean that, and it could mean that. In fact, a really, really interesting experiment is to take the sentence, give it to ChatGPT to draw it. So give it to DALL-E or your Gemini's image creation engine. Give the sentence to it and say, draw this. I'm going to show you what it draws. Even it does not agree upon what this means. Okay, now raise hands, give me one meaning. One parse of the sentence. We call it the semantic parse. Give me one semantic parse. Okay, so I took a picture of an elephant wearing my pajama wear. So उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे सोने के और मैंने उसकी तस्वीर खींच ली. That's one. Okay, what kind of an ambiguity did we run into in this sentence? इस यहाँ पर एक दूसरा सिमिलर पास क्या हो सकता था, आप ही बताइए. शॉट, गोली मार दी एक एलिफेंट को जिसने मेरे कपड़े पहने हुए थे. दो मानी. ये दो मानी बिटवीन तस्वीर खींची या गोली मार दी इज बिकॉज ऑफ द वर्ड शॉट, जो कि इस केस में पॉलीसेमी एग्जिबिट कर रहा है, दो सेंसेस एग्जिबिट कर रहा है. सो दैट्स व्हाट वी कॉल द लेक्सिकल एम्बिग्यूटी. इट्स बिकॉज ऑफ अ डिक्शनरी एंट्री, उसके मानी के ऊपर एग्री नहीं हो रहा. नाउ बिकॉज ये फर्स्ट लेवल पे दो हो गई हैं, लिहाजा अब जितनी अगली सेंसेस आएंगी वो सब दो दो होंगी. ये ट्री बनेगा. अब अगली सारी सेंसेस के अंदर इधर भी होगी और इधर भी होगी. चले एक सेंस मुझे और बताएं. दिस वाज प्रॉब्ली द स्ट्रेट फॉरवर्ड वन. अब जो अगली होंगी ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी. जी.
पहना हुआ किसने? ये पजामा वेयर पहना हुआ किसने? ये कपड़े पहने हुए किसने? हाथी ने कि मैंने? आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज। मैं पजामा वेयर हूँ, सुबह सुबह उठा, हाथी खड़ा हुआ था, मैंने गोली मार दी। वर्ड से क्या तस्वीर खींच ली। वर्सेस कि हाथी मेरे कपड़े पहन के खड़ा हुआ था। ऑब्वियसली दिस डज नॉट से अ लॉट अबाउट द वे आई मेंटेन माय हेल्थ, लेकिन वो मेरे कपड़े पूरी तरह से सही पहन के खड़ा हुआ था और मैंने उसको गोली मार दी। मे बी जस्ट बिकॉज इट गेव मी दिस रियलाइजेशन कि तो इसको भी पूरी तरह फिट आ गए। बट ओके, गिव मी मोर। एग्जैक्टली। सो एम्बिग्युइटी की वर्ल्ड में एक चीज याद रखें, sometimes the ambiguities become apparent or amplified when we replace the noun with a different noun. If I replace elephant with a fly or a mosquito or an ant, suddenly one parse becomes more probable than the other parse. अब ये ज्यादा probable है कि वो मेरे कपड़ों में फिर रहा है और मैंने उसकी तस्वीर खींच ली या गोली मार दी। अच्छा, अब यहां पर भी दो हैं, सेंस वाइज यहां पर भी दो हैं। वो फुली आपके कपड़ों में फिर रहा है मक्खी की तरह, या आप दोनों समहाउ उसमें घुसे हुए हैं। somehow it's like a big पजामा वेयर तो दोनों ने इकट्ठे पहना हुआ है। यू सी ऑल ऑफ दीज आर वैलिड पार्सेस। इनफैक्ट देयर आर, मेरा यहाँ मैंने पेपर का, या आई थिंक इसी में ही है, एनिमल क्रैकर्स में है, या देयर इज सम पेपर व्हिच आई थिंक comes up with maybe like 20 or 24 distinct parses of this sentence. And while this is really really funny at this point कि हम तो एक मजाक की एक्टिविटी कर रहे हैं, several fields, entire domains like law dwell upon exactly this. Policy, law, loopholes, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, उसके अंदर एक पॉलिसी लूप होल निकाला है, नहीं नहीं इस बात का ये मतलब नहीं है, ये मतलब है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट्स, interpretation of commandments, same ambiguity. It doesn't mean this, it means that. Oh, by the way, it also means that there is a historical context, there is a word context, there is a context of this book, there is a context of 10 other books, there is a context of what he said or what she said, and so on and so forth. दिस इज अ रियली रियली एक्सटेंसिव फील्ड ऑफ स्टडी। हम यहाँ पे यूं समझे एक छोटे से की पोल में से एक पूरी यूनिवर्स को देख रहे हैं। एम्बिग्यूटी इज ह्यूज एंड रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक जो हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छा इसका ना कॉन्टेक्स्ट दो मुझे, कॉन्टेक्स्ट, एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हो जाएगी। लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas, I don't know. So this second sentence prunes out some of the parses that we had kept for candidates. अगर हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक मशीन समझें जो कैंडिडेट पार्सेस ऑफ मीनिंग लेकर चल रही हो, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट पार्सेस जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। यानी अब मैंने कम से कम नहीं पहना हुआ, या कम एक उनमें से चला गया जिसमें उसने नहीं पहना हुआ था और मैंने पहना हुआ था, वो चला गया पार्ट्स बीच में से। हाँ, वो रह गया जिसके अंदर वो मेरे कपड़ों में घुसा हुआ है। वो वाली चीज अभी रह गई है। ठीक है, ओके, दिस इज एम्बिग्यूटी। बाय द वे, दिस इज व्हाट co-pilot thinks of it. Maybe also think so. We did not cater to the fact that I might be an elephant who is shooting himself wearing the pajamas, because इसमें shoot भी वही कर रहा है जिसने पहना हुआ है और वो है भी हाथी. So it even came up with a more outrageous parts of this. Here, I shot an elephant in my pajamas. Yeah, this is Gemini, or this was like not a good prompt. This was just draw this. So obviously, I did not want to resolve any ambiguity for it. And this is ChatGPT with the dolly, और ये पिछले साल की तस्वीर है, तो लिहाजा अभी तक आपको स्पेलिंग अभी भी खराब नजर आते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा ही खराब नजर आ रहे हैं। But the elephant is wearing the pajama. So 2 out of 3, because also they're sharing the engine. Uh, Dolly is being shared by Copilot and ChatGPT. तो वो दोनों के दोनों जो है उनके ख्याल में हाथी पजामा पहने हुए बड़ा एक नेचुरल सा कॉन्सेप्ट है इस दुनिया में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, बिकॉज इस चीज को हमें आगे जाके बहुत डील करना है। एम्बिग्यूटी हमारा एक बड़ा लंबा सफर होगी और बाज दफा हमको बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करेंगे जिसके ऊपर आप लोग चिल्ला उठेंगे कि इतना क्यों खप रहे हैं हम, एंड आई एम गोना से एम्बिग्यूटी। सो ओके, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, व्हाट डज दैट मीन? What does this sentence mean? Time flies like an arrow. Okay, whatever you think it means, hold on to that thought. And now read. Fruit flies like a mango.
I changed the noun, the carrier phrase is the same. Dash flies like a dash. But changing what was being carried by the carrier phrase changed our mental image. In the first one, it was metaphorical. वक्त तीर की तरह तेजी से गुजरता है. Metaphorical, not physical. But fruit flies like a mango means there is a particular mango that all fruit flies, whatever fruit flies are, apparently like. So then, if we go back to the first sentence, it would be perfectly valid to parse that time flies are indeed a type of flies, and there is a particular arrow somewhere that they are in love with. This is what GPT-4 thinks of time flies like an arrow. And this was done, I think, कल बनाई थी मैंने ये इस साल का. And this is what GPT-4 thinks of fruit flies like a mango. And probably because the context window was the same, उसने fruit flies के नीचे जो है ना वो एक rocket भी लगा दिया छोटा सा. The context impacting the outcome. ये जब हम आएंगे वहां पर तो देखेंगे it's not just your prompt which is dictating the outcome. The outcome is dictated by your prompt, the context, and also the memory that the engine has about you. तो वो सारा कुछ आप बदलेंगे and then there is the whatever probabilistic आपने इसमें seeding की हुई है और जो आपने उसके अंदर temperature डाला हुआ है सारा कुछ आ जाता है. Okay, so here are some examples. Ambiguity in parsing could be many due to many different reasons. They could be syntactic ambiguities, which is due to the sentence structure. So for example, अब ये मैं आपको ये चीजें करवा नहीं रहा, so don't worry, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, ना मैं expect करूंगा कि ये basically linguistics के अंदर this ambiguity, there are ways to represent a particular parts of the sentence. So for example, this is a prepositional phrase, in my pajamas. अब वो attach किससे हो रही है, I से हो रही है या shot an elephant से हो रही है. So basically उसकी attachment की ambiguity है कि I shot an elephant in my pajamas, so I am in my pajamas. And I shot an elephant in my pajamas. So an elephant is in the pajamas. So ये दो के बीच में जो है ये यहाँ से हम represent कर सकते हैं. Basically becomes a tree. We saw the Eiffel Tower flying towards Paris. You're flying to Paris. What does that mean? We saw the Eiffel Tower flying to Paris. Who was flying to Paris? We saw the Eiffel Tower flying to Paris. Or we saw the Eiffel Tower while we were flying to Paris. Both completely okay parses. And when you're dealing with something that does not have a very clear worldview, a being which has never seen your world, both parses could be equally likely. Okay, this is conjunction attached, attachment ambiguity. So old men and women. अगर आप इस दुनिया में कुछ अरसे जिंदा रहे हैं तो आपको पता होगा इसके सिर्फ एक ही लीगल पार्स है, old men and women. You can never say old men and women and live to see the next day. So yeah, women are never old. So yeah, old men and women is the wrong parts, and just kidding. Yeah, old men and women is the other parts. Okay, there was a question. It will help, but not resolve it. In fact, there is at least until now, there is no way, even after rephrasing and context and punctuation, whatever affordances languages allow you, there is no way to completely resolve it. Otherwise, the field of law would probably cease to exist, or the lawyers are going to charge like I don't know 24 rupees for the consultation. So वो जो सारी की सारी legal documentation है उसमें ambiguity और वो सारा कुछ जहाँ से आ रहा है ना वो रहता है, वो जितना मर्जी आप बता लें जी. शाबाश. Great, excellent. So what your point is that if something or someone has a world view just like us, which essentially means कि उसने दुनिया को इतना देखा और जाना हुआ है, तो उसके नजदीक इनमें से कुछ parses prune out हो जाएंगे. Not all of them. I shot an elephant in my pajamas कि बहुत से ऐसे valid parses हैं जो कि हमारे लिए भी हैं. मैंने तस्वीर खींची थी या गोली मारी थी, अब मैं शिकारी हूं या नहीं, और शिकारी हूं भी तो हो सकता है उस दिन मेरा शिकार का मूड नहीं था. So लिहाजा बहुत से parses, yes, it's right that the worldview does resolve some of the parses, but how much of a context? A sentence, two sentences, a paragraph, the entire book,
the entire genre, the country that the person is coming from. So जब अभी तो हमने ambiguity को मैंने वही कहा ना, इतने से सुराख में से पूरी कायनात देख रहे हैं. एक फ्रेज पाकिस्तान में हो सकता है एम्बिगुअस बिल्कुल ना हो, वही फ्रेज मैं यूएस में बोलूं तो एम्बिगुअस हो जाए. एक फ्रेज चले इसको मैं एक दूसरे अंदाज से कहता हूँ और एंड इट विल बी कंप्लीटली रेलेवेंट इन अ सेकंड. एक फ्रेज फनी हमारे लिए हो और एक फ्रेज वही फ्रेज फनी लेट्स से यूएस में किसी के लिए ना हो. एंटायरली पॉसिबल. अंग्रेजी के फ्रेजेस हैं, दोनों अंग्रेजी के फ्रेजेस हैं, आपके लिए फनी है दूसरे के लिए नहीं. दैट्स व्हाट स्टैंड अप कॉमेडियंस वर्क विद. इट समटाइम्स दिस कॉमेडी इज लोकलाइज्ड टू अ पॉइंट कि फॉर एग्जांपल खाली न्यूयॉर्क के लोगों को फनी लगेगी, खाली आई डोंट नो पंजाब के लोगों को वो फनी लगेगी अगर से जुमला उर्दू में, लेकिन वो जिस चीज का जिक्र कर रहा है वो खाली वो बंदा रिलेट कर सक रहा है जो यहाँ रह रहा है, फॉर लिंग्विस्टिक रीजंस, फॉर जियोग्राफिकल रीजंस, फॉर द रीजंस ऑफ सम पॉपुलर इवेंट और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो यानी एम्बिग्यूटी इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ बिग टॉपिक. हमने सिर्फ टच करना था, ये देखना था एम्बिग्यूटी एक चीज होती है. ठीक है, और आगे चलते हैं. So now that we know about ambiguity, senses, words, polysemy, synonymy, let's broaden the context. There is another concept which is called word similarity. Word similarity is not necessarily synonym. These are words with similar meaning, not synonyms, but sharing the some element of meaning. For example, car and bicycle. Okay. What do they share? Modes of transportation. They share they share meaning if we draw a hierarchy of meaning. So a bicycle is closer to a car than to say a fish. You see why? Both are vehicles. So now अब आपके जहन में पहली दफा ये उम्मीद की किरण जागनी चाहिए कि ओ ओके, could this be a graph with a distance, and could the distances indicate distance in the meaning, and the really close distance would make it almost synonymous, and really huge distances would make it entirely different morphemes, entirely different lexemes. Okay. Cow and horse, किसी भी दुनिया के अंदर शायद ये सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, सपोज टू लेट्स से ह्यूमन एंड हॉर्स, अगर उस सेंस में ले, मेटाफोरिकल में ना ले. ठीक है. तो दोनों की चार टांगे हैं, दोनों क्वाड्रुपेड्स हैं, दोनों जो हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ, दोनों मैमल्स हैं. सो इफ यू थिंक ऑफ इट लाइक द ट्रीज, you can think of it like leaf and bark. And now you can also start like, now that you're aware, it's almost like the matrix. Now that you're aware, you can't shut it off. अब बार्क देख के आपका दिमाग बार बार रेबल कर रहा है, बार्क तो भौंकना भी होता है, एंड दैट्स नॉट द वन जो लीफ के साथ सिमिलर होगा. सो इट्स अ पॉलीसेमस वर्ड जिसकी एक सेंस जो है वो इसके साथ सिमिलर होगी, नॉट ऑल सेंसेस. ट्रंक एंड बार्क, एंड नाउ ट्रंक एंड बार्क बोथ आर पॉलीसेमस वर्ड्स, बट दोनों की कोई ना कोई ऐसी सेंस है जो कि सिमिलैरिटी रखती है आपस में एक दूसरे के साथ, जब ये दरख्त के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, दरख्त का ट्रंक और ट्रंक के ऊपर बार्क. ओके. सो देर आर ह्यूमन टेस्ट, अगर पढ़ना है तो इसको आप जाकर पढ़ लीजिएगा, इनकी वेबसाइट के ऊपर बुक अवेलेबल है. ओके. अब हम बिल्कुल वहां पहुंचते जा रहे हैं जहां से अब हम स्विच करने वाले हैं अपनी दुनिया के अंदर, हम वापस आने वाले हैं दोबारा मैथमेटिक्स में जी. As we are going through the text and as we parse it, we start building a tree of senses. यानी अगर आप ये समझे कि अगर आप 1980s में होती रिसर्चर, तो आपको हो सकता है कि कोई बेस्ट पेपर अवार्ड वगैरह मिला होता. दिस वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच एट दैट टाइम. दैट ट्री इज नोन एज अ वर्ड नेट. आज से चंद साल पहले तक, 10-15 साल पहले तक, word nets were our best bet in order to navigate meaning. Word nets were essentially like this. They were words, nodes, and they were senses, and some senses overlapped. And you could navigate this graph to keep going from word to word and meaning and keep parsing it. Yes, you're absolutely right. You're spot on. ये बिल्कुल ऐसे ही होता रहा है, और जो अब हम करते हैं वो इसी का अगला स्टेप है. But obviously way more versatile than we were with WordNet. WordNet की अपनी बहुत सारी limitations थी. Sorry, what was the problem with this? The problem with this one was to grow it.
You needed linguists for this. For creating a word net, you needed linguists of the language. The process was extremely resource intensive, जिसमें बहुत से linguists बहुत सी डिक्शनरीज लेकर लफ्जों की histories निकालते थे. So the process was not even close to being unsupervised or what we call self-supervised. Nowadays, yes. अब तो जितना कुछ भी हम अब जो हम जानते हैं ना उसकी बेस के ऊपर इसमें से किसी चीज के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती. So it's entirely possible that you build an entire language processing system और आज तक उस जबान की किसी शख्स ने उससे कभी नहीं देखा. It's entirely possible. अब मुमकिन है. उस वक्त जो चीजें हम करते थे उस वक्त मुमकिन नहीं था. उस वक्त we just had the surface forms of the word to play with. Now we have much deeper representations. और उसी तरफ हम जा रहे हैं. वही करने लगे. सर. हाँ, पॉलीसेमस नहीं. ट्रंक और बार्क सिमिलर हैं. हाँ, एक सेंस ऐसी है जिसमें वो एक दूसरे के करीब करीब पाए जाते हैं. हाँ, या पॉलीसेमस दोनों हैं अलग अलग. सो जो ट्रंक था वो भी पॉलीसेमस वर्ड है. ट्रंक बक्सा भी हो सकता है और ट्री का ट्रंक भी हो सकता है या हमारा ट्रंक भी हो सकता है, सो ऑन. और जो बार्क है वो भी बार्किंग भी हो सकती है और वो छाल भी हो सकती है दरख्त की. यस यस, वो उधर ही जा रहे हैं बिल्कुल. यू रीच्ड इट. वही करने लगे. अच्छा. ओके. सो अब सिमिलैरिटी से अब हम उससे भी ज्यादा एक लूज रिलेशन की तरफ जा रहे हैं. रिमेंबर, पूरी डिस्कशन जो है ना वो आज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ऑफ वर्ड्स की है. वो होता है ना रिलेशनशिप स्टेटस. तो इस वर्ड का रिलेशनशिप स्टेटस जो है ना वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड है. सो बेसिकली वो हम यहाँ पर क्या सो योर कॉफी एंड टी आर सिमिलर वर्ड्स, हाउएवर योर कॉफी एंड कप आर नॉट सिमिलर वर्ड्स. This is not the tree bark relationship. This, however, still you can see that coffee and cup, they go together. Why is that? What kind of a relationship is that? That relationship is an association relationship. Often when you find coffee in a text, you also find cup in a text. Can one predict the other? Yes. If you have found coffee somewhere in your text, it is highly likely कि अब आपको कहीं कोई cup मिलने वाला है. You have found cup in a text, it's very likely कि अब आपको कहीं कॉफी या टी मिलने वाली है. ये बात समझ में आ रही है? So this is more sort of like a correlation between two words, कि एक word दूसरे के बारे में बता रहा है. This leads to a concept of what we call a semantic field. Semantic field का क्या मतलब है? This is directly related to NLP tasks. Semantic field means मानी जिसके अंदर बहुत सी चीजों के मिलने के chances हो. For example, when we're talking about hospitals, certain words suddenly enter the semantic field. Surgeon, doctor, stethoscope, scissors, pliers, I don't know, thermometers, patient. These are not similar words, but these words suddenly become high probability. Their distribution suddenly changes, probability distribution suddenly changes now that we are in a hospital semantic field. ये बात समझ में आ रही है? साथ हो ना मेरे? At no point lose it. So we're almost at the end now. 99 पे विकेट जाए ना तो बहुत अफसोस होता है. You're almost there. I'm about to start the match. So इसलिए इस वक्त I don't want to lose you. कि आखिरी बात नहीं समझ आई जिसको मैंने कंक्लूड करना था, जिस बात के लिए सारी मेहनत की थी सर. Exactly. Bag of words at a very crude level, they capture these semantic fields. Yeah, just based on the counts, okay, there is a lot of doctors and a lot of surgeons and a lot of I don't know green suit and whatever in that semantic field. It says, oh, by the way, this is about hospitals. This is about medicine. This is about cinema. This is about movies and so on and so forth. Yeah, exactly. Scalpel and surgeon. So semantic field, words that cover a particular semantic domain, bear structured relationship with each other. ये तीन मैंने आपके सामने रख दिए हैं. Hospitals, surgeon, scalpel, nurse, anesthetic. Hospital, restaurants, waiter, menu, plate, food, menu, chef. Houses, door, roof, kitchen, family bed, and so on and so forth. ये वो observations थी सारी जो कि काफी अरसे तक होते रहने के बाद led to one of the biggest breakthroughs in the field of natural language processing. What enabled whatever we are able to do these days. ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ किसी एक फील्ड से नहीं आ रहे. ये 1950s और 30s के अंदर लिंग्विस्ट्स भी कर रहे थे. हम सिर्फ उस चीज को डिस्टिल करके करने काबिल हो गए.
सो वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ. एक आखिरी एक दो टर्म्स हैं जिसके बाद मैं उसके ऊपर चलता हूँ और आपके एक जो क्वेश्चंस हैं फिर ले लेता हूँ. सो सेंसेस दैट आर ऑपोजिट्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन फीचर ऑफ द मीनिंग. अच्छा, अगर मैं रिलेटेडनेस की बात करूं तो एंटोनिम्स आर वेरी हाईली रिलेटेड वर्ड्स because they just differ in some one aspect. Otherwise, वो बहुत related word है. For example, dark and light, short and long, fast and slow, rise and fall, hot and cold, up and down, in and out. So if you now start thinking of these words having attributes, कोई एक attribute बस ऐसा है जिसमें ये उलट गए. Man and woman, सारे attribute same होंगे, gender का attribute उलट जाएगा. So these antonyms are actually really, really tightly coupled words, highly similar words to each other. So more formally, antonyms can define a binary opposition or be at opposite ends of a scale, long, short, fast, slow, or be reversive. So उसके अंदर कोई change करके आप उन्हें reverse भी कर सकते हैं. And sometimes this reversal could be extrinsic. यानी आप कोई not लगा के या un लगा के या कोई उसके साथ prefix लगा के affix लगा कर उसको उलट सकते हैं. ठीक है? Okay, and then words also have affective meaning. This is just adding more complexity to it. Words के साथ जो है वो ऐसा मानी भी हो सकता है जो उसको कोई sentiment दे रहा हो, positive connotations, negative connotations दे रहा हो. For example, एक ही एक्ट है. ओके, लेट मी, मैं इसे कैसे कहूं कि कॉनोटेशन लेस कर दूं. ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी could be called copy, replica, or reproduction. It could also be called fake, knockoff, and forgery, or plagiarism. What's the difference between defining this act of control C, control V? What is differentiating between forgery or plagiarism versus copy or replica? It's a connotation. The difference amongst those words is the connotation. When you say a word like deep fakes, there is a negative connotation because you're calling it a fake. When you call it synthesized images, the connotation is gone. So these connotations also exist on spectrums. So now you have some idea of how words work. हमने अब तक ये सारी चीजें देखी हैं. Now we are ready. Now we are equipped. We have the right weaponry to now go back and start playing with this complex domain of words. So now our goal, next goal is first at a very simple level, इस गेम का जो पहला हिस्सा होगा ना, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होगा. अच्छा, अब यहाँ से आगे ना, I also want you to do start doing another thing. Remember from your basic machine learning that there was something about explainability of machine learning. So machine learning models could be explainable, where whatever the decision that they're making, you can just go in and see, okay, why is it saying that? Or they could be less explainable, in which case they just tell you the decision, they don't say why. And there is no easy way to know why. In fact, there is no way, in some cases, there is no way to know why. You just have to, in a very abstract manner, say, okay, this part of this network is active. That's why. Like, what do I do with that information? So, अब जो गुफ्तगू होगी ना, it's gonna start from crude to sophisticated, but explainable to very less explainable. ठीक है, ये इस तरह ही ये पाथवे पूरा चलेगा और ये होपफुली आप लोग इसके साथ साथ रहेंगे तो चीजें समझ आती जाएंगी. ओके, सो आवर बिगेस्ट मिशन जिस वजह से हमने टोकनाइज, सो अब याद करें हम पहुंचे कहां तक थे. वी हैड टेकन डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैड टोकनाइज्ड देम. हमने टुकड़े कर दिए थे लफ्जों के. ठीक है, अब टोकन्स को हमने कन्वर्ट करना था नंबर्स में ताकि उस नंबर्स को कंज्यूम कर सकें कोई न्यूरल नेटवर्क्स. यहां तक हम पहुंचे थे. सो लेट्स डू दैट. उसमें हमारा पहला जो हमें साथी मिला था, that was that one hot vector. So your one hot vector essentially is just your vocabulary sized vector जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्री वन है. वो एंट्री कॉरेस्पॉन्ड कर रही है उस vocabulary entity पे. By the way, never make the mistake of thinking of one hot vectors as a crude instrument that you're gonna get rid of. They're gonna be with you even in transformers. So they're gonna stay with you. सिर्फ उनका टास्क बदल जाता है. वो अभी यूज हो रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, बाद में यूज होंगे लुकअप करने के लिए. तो ये जा कहीं नहीं रहे, तो आपको अच्छी तरह आने चाहिए. So your one hot vector essentially is a vector of this the entire vocabulary size. Now you know what vocabulary means. अब आप अपनी BPE और word piece और वो सारी tokenizations करने के बाद now you know exactly what V means. So your vocabulary is not necessarily a word. Your vocabulary could be just tokens, which are subword tokens or the whole word tokens.
सो वो पूरी वी साइज के अंदर से जो भी टोकन यहाँ पे आया है उसकी जगह वन है, बाकी सारे के सारे जीरो है, ठीक है। ओके, सो लुकिंग एट अ डिक्शनरी ऑफ से 10,000 वर्ड्स, मैं वर्ड्स कह रहा हूँ लेकिन टोकन कहना चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय एंटायर vocabulary. The vector for A has a 1 at position 1, the vector for Aaron has a 1 at position 2. Let's suppose ये सेकंड पे आता है, तो जहां भी उस vocabulary के अंदर आएंगे वहां वहां इसमें वंस होंगे। सो फॉर एग्जांपल, मैन, वुमन, किंग, क्वीन, एप्पल, ऑरेंज, इसके साथ नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये नंबर्स आप पिछली क्लास में देख चुके हैं जब आपने टोकनाइज किया था, और घर जाके जो आप इतनी मेहनत करते रहे हैं, जाहिर है मैंने आपको लेक्चर भी नहीं भेजा था इसी वजह से कि आप लोग अपने घर जाके खुद ही इतनी मेहनत में मगन हैं, मुसलसल जाके इसके कोड लिख रहे हैं और चला रहे हैं, तो उसमें आपने खुद ही देख लिया होगा कि व्हेन यू आस्क योर मॉडल कि वो आपको रॉ टोकन्स दे, तो वो नंबर्स की फॉर्म में देता है। वो नंबर्स यही होते हैं, these numbers are essentially just the location of that vocabulary item in that vector of vocabulary, in that one hot vector, ठीक है। Okay, but there is a problem. These one hot vectors do not allow us to carry across and generalize meaning in any sense. For example, अगर मैंने ट्रेनिंग के वक्त ट्रेनिंग कॉर्पस में एक सेंटेंस देखा था, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, और मेरे टेस्ट में डेटा आ गया, क्वेश्चन आ गया है, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ एप्पल डैश, because apple and orange have different one hot vectors and there is no relationship between them. There is nothing indicating that they're close to each other or they're related to each other. I cannot use this knowledge to infer juice here. I need to have seen apple juice in the training data in order to say apple juice. This is what NLP used to do in the previous century. This is where we were. इस वजह से जो है वो बहुत से काम होना मुमकिन नहीं होते थे, बिकॉज उनको सरफेस लेवल के रिलेशनशिप सिर्फ पता थे, ठीक है। ओके, फ्रॉम दिस these basic vectors we form these bag of words, which is essentially just the sum of these vectors for a document. So you, for example, if you want a bag of words for an entire document, you convert all words, टोकनाइज का स्टेप को मैं बीच में से इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, यू टेक ऑल द वर्ड्स, you convert them into one hot vectors, you sum up all the one hot vectors, you get one vector where you find the sum of the first vocabulary item in the document, the sum of the second vocabulary item, third, fourth, fifth. This is your bag of words, okay? So your bag is essentially a multisect. Here you see a bag, so this is a bag of words. इस document में it इतनी दफा आया है, I इतनी दफा आया, the इतनी दफा आया, and so on and so forth. Why is this relevant? By the way, this used to work really well. इसको हम यही कहते हैं कि this worked way better than it should have worked. These bag of words are really good representatives of many concepts, like for example authorship or gender of the writer or genre or topic. So बहुत सी चीजें इसमें बड़े आराम से निकल आया करती थी, because across genders we use different words with a different frequency. कुछ stereotypical word usages होते हैं, पाकिस्तानी जब अंग्रेजी लिखेगा वो कुछ खास वर्ड ज्यादा यूज करेगा, अमेरिकन जब लिखेगा कुछ खास वर्ड ज्यादा यूज करेगा, एंड these are indicative, तो ये इवन बैग ऑफ वर्ड में पकड़े जाते थे। however, by the way, ये आपकी टाइप्स हैं और ये उसकी टोकन फ्रीक्वेंसी है। Okay, this slide is based on Graham Newbigg's slides. By the way, in parallel, आप में से जो लोग बिल्कुल super serious हैं, I would highly recommend Graham's course at CMU, जो उन्होंने भी फॉल में पढ़ाया है, एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। सो बीच में जगह जगह मैं आप लोगों को रेफर करता रहूंगा उनकी स्लाइड्स की तरफ भी। his entire course is also on YouTube, so you can watch the lectures as well and compare across. So सो ये उनकी स्लाइड से मैंने चीज, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इन्होंने काफी एक जगह पे किया हुआ था। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी थिंक ऑफ सेवरल टास्क्स ऑफ एनएलपी एंड सी वेयर वी आर, और उसको बार बार हम बाद में देखते जाएं कि हम कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। सो हैंडलिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड और कॉम्पाउंड वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, आई लव दिस मूव वर्सेस आई लव दिस मूवी वर्सेस आई लव दिस मूवी। इन दोनों के बीच में जो फर्क है उसको नहीं इंडिकेट कर सकते, उसको नहीं पकड़ सकते आपके बैग ऑफ वर्ड्स या वन हॉट वेक्टर्स, बिकॉज लव और लव्ड का अपना अलग अलग वन हॉट वेक्टर होगा। हाउएवर, इसको कोई चीज पकड़ सकती है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, वो क्या है? आप पढ़ चुके हैं, इस चीज को कॉमन करने का काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं नहीं, उससे भी पहले टोकनाइजेशन। होपफुली योर टोकनाइजेशन विल कट द लव सेपरेटली एंड ईडी को अलग कर देगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको कर लेगा। तो आपके सब वर्ड मॉडल्स जो हैं वो इस चीज से, कॉन्जुगेटेड फॉर्म से, इन्फ्लेक्शनल फॉर्म से, डेरिवेशनल फॉर्म्स को अक्सर डील कर लेते हैं। हैंडलिंग ऑफ वर्ड सिमिलैरिटी, फॉर एग्जांपल, आई लव दिस मूवी वर्सेस आई अडोर दिस मूवी, ये करने के हम काबिल नहीं हैं अभी विद आर टोकनाइजेशन मॉडल्स। ये वो चीज है जो हमारी एम्बेडिंग्स इनेबल करेंगे, ठीक है। So this is going to be handled, at least we'll start handling this using
using word embeddings. Handling of combination features, for example, I love this movie, I don't love this movie. Multi-word features. ये multi-word features को खाली embeddings डील नहीं कर सकेंगे शुरू शुरू में. इसको डील करने के लिए हमारे न्यूरल नेटवर्क्स आएंगे और उनके कुछ यंगर कजन्स आएंगे जो हमारी मदद करेंगे. सो दे गोना हेल्प अस कि ओके इस वर्ड को इस वर्ड में मिक्स करो और उसके बाद एक नया पोर्शन बनाओ जिसके अंदर डोंट लव का मतलब हो. एंड देन फाइनली हैंडलिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि आपने वो अभी एलिफेंट वाली एग्जांपल देखी थी. इट हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बट इज बोरिंग ओवरऑल. इस बट ने क्या किया इस सेंटेंस के साथ, ये जो चीज है इसको पकड़ने के लिए वी वुड नीड आवर सीक्वेंस मॉडल्स. ठीक है जी. कॉम्बिनेशन फीचर्स, हम्म बिल्कुल कर देता है. वो डू और नॉट को अलग अलग कर देगा, लेकिन वो डोंट को लव से नहीं जोड़ सकता ना. टोकनाइजेशन जो है वो इसको इससे नहीं जोड़ सकती. ये अलग टोकन है, वो अलग टोकन है. टोकन्स के आपस के ताल्लुकात अक्रॉस टोकन्स जो हैं वो किस तरह से मेंटेन होंगे. एक मीनिंग रिप्रेजेंट करे. वो मीनिंग रिप्रेजेंटेशन एम्बेडिंग्स के थ्रू आएगा. और वो मीनिंग उस एम्बेडिंग्स में भी अकेली एम्बेडिंग से नहीं आएगा, बल्कि न्यूरल नेटवर्क किसी तरह उनको कंबाइन कर रहा होगा, अलग अलग जगहों से लाकर कंबाइन कर रहा होगा. ओके, सो योर वन हॉट वेक्टर्स आर not meaningless, they are meaningless. They don't have a meaning. I have ruined the language for you, literally. आज के बाद से तुम लोगों को जबान बोलने में भी मुश्किल होगी और लिखने में मुश्किल होगी. You'll keep questioning yourself कि नहीं इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए. Okay, so the dot product between apple and banana is exactly the same as the dot product between apple and aeroplane, which essentially is zero. बिकॉज इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जगहों पर वन नहीं है, तो वन हॉट वेक्टर्स कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बना सक रहे. ठीक है. सो नाउ आवर न्यू आइडिया इज एम्बेड मीनिंग इन these vectors. The meaning of a word will now depend on its position in a multi-dimensional vector space. These new vectors for representing words are called embeddings. One hot vectors can be called sparse representations, and these new embeddings will be hopefully dense representations. Not all of them will start out with very sparse representations of meaning, not one hot vectors, but sparse embedding vectors. And then we will keep making them denser and denser. And then eventually we're going to reach a stage where it's going to be arbitrary. We're going to say any length. We don't care. You decide कितना बड़ा vector चाहिए और उतना हम बना देंगे. So it's going to reach there. Okay, so the vector semantics essentially means it's the standard way to represent meaning in NLP. So ये मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि linguists 1950s में ये बात कर रहे थे, two words that occur in a very similar distribution whose neighboring words are similar have similar meanings. ये बेसिकली वो बुनियादी बात है जिससे सारा कुछ शुरू हो रहा है. A person is known by the company they keep. बेसिकली ये वो वाली बात है. A word is known by the company they keep. लफ्ज खुद कुछ नहीं है, उसका मीनिंग उसके नेबर्स हैं. तो मीनिंग सारे का सारा नेबरहुड में पड़ा हुआ है. अब हम इस चीज को किसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे. सो when we have almost identical environments, we say that they are synonyms. तो इवन सिनोनिम खुद डिफाइन करने का एक तरीका लिंग्विस्टिक्स के पास ये था कि अगर उसके सारे के सारे नेबर हमेशा सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक सिनोनिमस वर्ड है. ठीक है. ओके, सो हियर इज एन एक्चुअल एग्जांपल. दिस इज टेकन फ्रॉम द बुक. इनफैक्ट इनकी बुक में ये नहीं है, ये इनके लेक्चर्स में है. सो जोराफ्स्की एंड मैनिंग have their entire natural language processing course online. बड़ा पुराना उनका कोर्स है, उसमें कुछ लेक्चर्स are pure gold and at their time they were like literally gold. So उनमें से एक लेक्चर है जिसके अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया है. Let me discuss this. Suppose there is a new word. How many of you know what onchoy is? Onchoy. How many of you know what onchoy is? हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा है, शक्लों से लग रहा है सबको पता है. लाइक यूर थिंकिंग इतनी आम सी बात आपको नहीं पता, हम सबको पता है. Like our generation knows it completely. So yeah, okay, I'm like no hands raised, so I'm assuming you don't know. So we just have three sentences about ong choy. Suppose it's a new word we don't know. Cantonese का word है और इसके तीन में sentence मिले. Ong choy is delicious sauteed with garlic. Ong choy is superb over rice. Ong choy leaves with salty sauces. फर्ज करें हमें ये तीन sentence मिल गए. But we don't know what ong choy is. By the way, do you know now what ong choy is? Yeah, you're starting to make some sense of it. Okay, so you went into your corpus and you also found these sentences. Spinach sauteed with garlic over rice. Charred stems and leaves are delicious. Collard greens and other salty leafy greens. So you found these other words, spinach, collard greens, in similar word contexts like this new word, ong choy.
but you don't know what on choice. You have never met a linguist, you have never met a person जिसको पता हो कि ये word क्या है. But just because आपको जो चीजें पहले पता थी and the context was similar, you came to the conclusion on choice a leafy green like spinach, chard, and collard greens. We could conclude this based on words like rice, garlic, salty, leaves, and delicious, and sauteed. तो आपने उसकी बेस पे ये अंदाजा लगाया कि इस तरह की कोई चीज होगी और आपको बाद में पता लगा कि indeed it's an aquatic, it's a water spinach. It's I think sort of a weed जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है. So this is how this is your first look at how uh, almost an unsupervised manner of learning could be adopted in language. अभी आपने खाली उसकी पहली एक झलक देखी और ये अभी इतनी को अनसुपरवाइज नहीं लग रही, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अनसुपरवाइज होती जाएगी और फिर हम इसके लिए एक नया नाम रखेंगे सेल्फ सुपरविजन. सो यहाँ पर एक मॉडल खुद से जबान सीख रहा है बेस्ड ऑन जो उसे उससे पहले से मालूम है. उसने एक नया वर्ड लिया और खुद ही से सीख लिया कि इसका मतलब क्या होगा, किसी ने नहीं उसको बताया, just based on the context in which that word occurs. Okay? So you humans just taught the machine what this new word onchoy means. You don't have to tell the machine. The machine knows. Okay. All right. Give us a hand. जी. Excellent question. The way you have phrased it, my answer would be the embeddings. जो सारा बोझ उठा रही है वो एम्बेडिंग्स उठा रही है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी सोफिस्टिकेटेड एम्बेडिंग्स की बात कर रहे हैं. अगर हम बर्ड की या बर्ड के किसी औलाद की बात कर रहे हैं या जीपीटी की बात कर रहे हैं या किसी की कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम्बेडिंग्स ही सारे के सारा मीनिंग अपने साथ लेकर आ रहे हैं. ठीक है. सिर्फ जो उस मीनिंग के अंदर से प्रूनिंग करना है ना कि कौन सा मीनिंग का हिस्सा आप आगे लेकर चलना है, वो सीक्वेंस आपका बीच में एम्बेड करना है. ठीक है. और ये हम करेंगे वो अपने हमारा बाकायदा इंशाल्लाह एक कंप्लीट लेक्चर्स हैं जो कि ट्रेनिंग ऑफ बर्ड के ऊपर है, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली यही काम कर रहे होंगे और उसमें वही टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे जो अभी थोड़ी देर के बाद हमने या अगले लेक्चर के शुरू में जो हमने वर्ड टू वेक की ट्रेनिंग में करना है. इनफैक्ट द ट्रेनिंग इज वेरी सिमिलर. Okay, so now equip it with our new ideas. The first idea defining meaning by linguistic distribution, meaning distribution of neighbors, and idea two meaning as a point in a multidimensional space. So meaning could be a point in a multidimensional space. हम essentially ये कह सकते हैं we define meaning as a point in space based on the distribution. These new vectors for representing words are called embeddings. The word embedding itself derives from its mathematical sense as a mapping from one space or structure to another, although the meaning has shifted. So now let's take a very dumbed down, very simplified example to see how these things could actually work. So मेरे पास ये कुछ words हैं: man, woman, king, queen, apple and orange. ठीक है. और यहाँ मेरे पास कुछ और वर्ड्स हैं जो कि मैंने हैंड पिक किए हुए: जेंडर, रॉयल, एज एंड फूड. लुक एट दीज नंबर्स. अभी ये ना पूछें कि नंबर आए कहाँ से. लुक एट दीज नंबर्स एंड सी इफ यू कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. Hint: first look at similar words. Look at man and woman. Look at the various numbers: 0.01, 0.02, 0.03, 0.02, 0.04, 0.01. Age, food, royal, gender. There is one where they are exactly opposite to each other. For many others, they are very similar. So man and woman are expected, based on this, at least this data जहाँ से भी आ रहा है, to be of similar ages. Why? Well, girl and boy, and maybe different words for older men and older women. Baby or child, उससे अलग करते हुए. King and queen, interestingly, have this opposite dimension of gender, but very similar here. They're also very high on royalty that men and women were not. Apple and orange are very high on food, not very royal, and they don't seem to have a lot in terms of gender, but they do seem to have something in case of age, but वो age वाली चीज consistent नहीं है.
एक दूसरे से opposite हो रही है. Okay, wherever this data comes from, it's showing us that okay, it is possible that words meaning could be encoded in terms of some other words. In fact, that's what all human language does. Words define words. So it's not something new that we're doing here. Okay, so now that we have this, इस पूरी चीज में अब पहली मर्तबा ये रिलेशनशिप आना शुरू हो जाएगा कि अगर मैं इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस डिफाइन करना चाहूं तो आई एक्चुअली कैन. I can start defining similarity or difference measures or distance measures. ठीक है. So अब मैं ये देख सकता हूँ कि I want a glass of orange and I want a glass of apple. Apple and orange, if both of them are very close to each other on some distance scale, then I can hop from apple to orange and say, okay, orange juice देखा हुआ है लिहाजा यहाँ पर juice आएगा. Make sense? बात समझ आ रही? Okay. So when we are able to do all of this, we need to see how to train this. But when we have trained it, it's going to lead to a world like this, where words which are similar, not synonymous, similar, and sometimes similarity will just be based on the semantic field. Now, now you know हमने लेक्चर का आधा टाइम उस चीज पर क्यों लगाया. So जो चीजें यहाँ करीब होंगी वो हमेशा सेम वर्ड नहीं या वो हमेशा एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं होंगे. वो कभी कभी कोई और रिलेशनशिप रख रहे होंगे where it simply means कि वो टेक्स्ट में एक दूसरे के पास पाए जाते हैं. So it's going to be cup and coffee, it's sometimes going to be bark and tree, it's sometimes going to be, so for example, to buy that now, apostrophe S, R, I, U, then with is. Stop words. All of them are different types of stop words. G. Excellent. They're going to be in two different places. One of the mice is going to be there with the rats and other rodents, and the one of the mouse is going to be there with Apple and screen and desktop and things like that. We have two separate uh, examples of them. Now how this will be encoded in an actual vector for it वो eventually हम देखते हैं कैसे होगा. ट्रेनिंग में इसका क्या करना है वो हम देखेंगे. ठीक है. So not good, dislike, bad, worse, incredibly bad, and worse. Very good, incredibly good, fantastic, amazing, terrific, nice, good, and wonderful. We can see how these things go together. G. Sorry, किसके अंदर आई थी? Uh-huh. Yeah, that's a great question. Or this is a made-up example, लेकिन they took care of that when they made it. Usually, the idea is that in the history, mostly you become king and queen at a later age. So boy king and girl queen जरा concept नया है. Cartoons में ज़्यादा है. Coronation day is at age 16, but in reality ये इतना ज़्यादा common नहीं होता. So इस वजह से इसलिए है. लेकिन again, just bear in mind this is a made-up example. This was just to show कि क्या होगा. When you're gonna see the real vectors, they won't be even nearly as nice looking as them. उनकी सारे कमाल नजर आना शुरू होते हैं at the high level. When you really zoom out and see कि पूरा वेक्टर क्या represent कर रहा है, then we start seeing कि how amazing they are. Okay, अब हम ये करने लगे हैं कि we're gonna build. I mean, we still have like 3 minutes, and then I'm gonna take 5 more minutes. So I have 8 minutes. In these 8 minutes, I'm gonna do 3 steps. Stay with me in the 3 steps, and you will never forget in your life कि ये embeddings आ कहाँ से रही हैं. So just stay with me for the 3 steps really quickly. Term document matrix. सबसे पहला काम हम ये करने लगे हैं शेक्सपियर के कोई 4 प्ले लेंगे. 2 कॉमेडीज हैं, 2 ड्रामास हैं. इन 4 प्लेस को लेकर कुछ वर्ड्स के साथ इसकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं. ओके, सो वी हैव एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर एंड हेनरी द फिफ्थ. अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हमें ये पता ही नहीं है इनमें से कौन सी कॉमेडीज है कौन सी नहीं है. सो लेट्स से वी हैव वर्ड्स बैटल, गुड, फूल एंड विट. लुक एट द डेटा. Can you tell me, and especially if you don't already know these plays, can you tell me just by looking at these words, which ones are the comedies and why? Because it has more fools and more wit. So even without ever peeking at those books, we were able to tell in a few seconds कि इसमें से comedies कौन सी हैं और कौन सी नहीं. So I can essentially represent this document with a vector which has these 4 fields.
In theory, it can have the entire vocabulary as the fields. But for now, these four fields. So I have these four vectors, and I can do stuff with these vectors. So for example, I can map these vectors, and when I plot these vectors on, let's say, fool and battle, दो words जो दो opposite जगहों से आ रहे हैं, I can see that Julius Caesar and Henry V go in one direction, and As You Like It in Twelfth Night go in the other direction. And these vectors are now clearly showing कि कौन सी genre ये represent कर रहे हैं. Everyone with me? Okay. So now these vectors are similar for the two comedies, both, but comedies are different from the other two. Comedies are more fools and wits and fewer battles. Okay. Now, can we reverse it? Okay, this is the flipping moment. This is where literally the universe changes. I'm gonna say, okay, इससे पहले in documents के vectors से और words represent कर रहे थे. How about we flip it and say battle is the word which occurs more frequently in Julius Caesar and Henry V and less frequently in As You Like It and Twelfth Night. So the thing which is being identified now are the words, and the thing which is identifying it are the documents. So document term frequency becomes term document frequency, and the vectors flip. And now you can clearly see that this also makes sense. Your fool and wit will be closer to each other, and battle and good will be maybe, yeah, the good will be separate, but that battle is the odd one out. So battle is the kind of word that occurs in Julius Caesar and Henry V. Fool is the kind of word that occurs in comedies, especially the Twelfth Night. Okay, all right. Final moment of truth. How about we get rid of the document altogether? We just get words and words. So we have the vocabulary, Adwa, computer data, result, pie, sugar. We have cherry, strawberry, digital, and information. We make vectors. Look at the vector for digital. Look at the vector for information. Look at the vector for cherry. And look at the vector for strawberry. And see if you can find something here. So now we can see two words are similar in meaning if the context vectors are similar. अब ये relationships कहाँ से आएंगे? Maybe we can make a window and parse the text and keep finding the these. So for example, cherry और aardvark पे one कब आएगा? जब वो adjacent होंगे. Adjacent का क्या मतलब है? Cherry के बाद aardvark आए या aardvark के बाद cherry आए? Okay, let's make it bi-directional. जब भी कभी ये एक word के distance पर आए, that means window of size 2 से आप इस पूरे को देख रहे हैं. What if the window is of size 3? That means कि अब ये दो वर्ड के डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं. Cherry and Adwa could be separated by one word and still be considered neighbors. I can keep changing this window, 5 words, 10 words, 15 words, 20 words, and the entire way it deals with language changes. In fact, we have these known relationships. कि विंडो बड़ी करें और छोटी करें तो क्या होता है. ठीक है. So now I can plot them. Data in computer, your digital and information are fairly high and aligned with these two attributes. So this term matrix, also called the word matrix or the term context matrix, similar words have similar context word vectors. The columns are labeled by context words. V into V dimensions हैं इसकी. These are sparse embeddings. These are embeddings, but these are sparse embeddings. V cross V हैं ये. Each cell records the number of times the row target word and the column context word co-occur in some context in some training corpus. The context would be a document, in which case the cell represents the number of times two words appear in the same document. It could be a window, जैसे अभी हमने कहा +- 4 words or whatever. मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ. आई नो कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त जल्दी से अगली क्लास अटेंड करने का दिल चाह रहा है, तो यू कैन गो. अगली क्लास में इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि ये जल्दी से खत्म हो जाएगा एंड वी शुड बी एबल टू कंप्लीट आवर वर्ड टू बैक इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. एक सेकंड मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं अनलेस यू वांट टू बी रिकॉर्डेड.